Hi guys, in this video I'm going to be showing you how to add typewriter effect in Adobe Premiere Pro. So guys, this video is going to be in two different languages, English and Urdu. Watch complete video to better understand. तो guys, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप कैसे Adobe Premiere Pro पर एडिटिंग करते हुए टाइपराइटर इफेक्ट दे सकते हैं. बहुत ही ईजी होगा, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश एंड उर्दू में. सो लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल. सो गाइस, हियर आई एम Adobe Premiere Pro 2020. So now since color of text is black, so I need some white background or some white video. So I'm gonna import some white picture or some white video. So guys, क्योंकि text का color जो है वो black होता है, तो इसलिए मुझे कोई white background या white video चाहिए. तो मैं import करता हूँ कोई भी white background. So I'm gonna import a white picture. तो मैंने ये white picture import कर लिया and now I'm gonna drag drop to this timeline. Timeline में मैं ले आऊँ. There we go. Now you guys can see this white picture here as a background. Now we're gonna be adding text, which is gonna appear as a typewriter effect. So now what we do is we go to File and New and then Legacy Title. तो guys उसके बाद हम जाएंगे File पर, New और उसके बाद Legacy Title पर. Click करेंगे. Okay, after we click on that File, New and Legacy Title, this pop-up appears. Now you guys can name this text because we're going to be typing in that specific text that we want to appear as a typewriter effect. So I just want to name it because maybe in your case you may be adding like 5 such texts in 5 different points or in 5 different areas in your video. So in my case I'm naming it to be tutorial adding typewriter effect. तो गाइज ये पॉपअप अपीयर हुआ है उसके बाद, और इसको कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं. यहाँ पर ये नाम जो है इस टाइटल का है, ये टाइटल फाइल के तौर पर आपको इंपोर्ट वाला जो पैनल है, प्रोजेक्ट पैनल, उधर फाइल के तौर पर दिखेगा. अगर इनकेस आप अपनी वीडियो में 5-6 अलग अलग जगह पर ऐसा टाइपराइटर इफेक्ट देने जा रहे हैं तो आपको 5-6 अलग अलग टाइटल्स, ऑब्वियसली सेम तरीके से ये जो हम ट्यूटोरियल कर रहे हैं इसी तरह आप करेंगे, तो 5-6 डिफरेंट टेक्स्ट आप इसी तरह से बनाएंगे. अब ये 5 डिफरेंट फाइल्स होंगी तो उन्हें आप डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट कोई नेम देंगे, तो इसी तरह से आप नेम ऐड कर सकते हैं. एंड यू गाइस कैन जस्ट अपडेट और मेक चेंजेस टू इट्स रेजोल्यूशन एंड FPS, बट आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग हियर एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ओके. आप रेजोल्यूशन और FPS भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हो, और मैं नहीं कर रहा, ओके पर क्लिक किया. Now this dialog box appears. Now this is where we enter that specific text that we want to appear as a typewriter effect. तो यहाँ पर हम वो टेक्स्ट ऐड करेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे जो हम चाह रहे हैं, जिसको हम बाद में टाइपराइटर इफेक्ट वाला वो सीन देंगे, इफेक्ट देंगे. So guys, we're gonna click anywhere here in this white working area and type in that specific text. तो इस वाइड वर्किंग एरिया में क्लिक करूँगा और मैं वो टेक्स्ट जो है टाइप कर दूँगा. फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम टाइपिंग ओल्ड व्लॉग 2015, लेट इट बी 2017. ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया है, ओल्ड व्लॉग 2017. नाउ आई एम गोना सेलेक्ट दिस टेक्स्ट and then we're gonna go to color and then click here. तो टेक्स्ट को मैं गाइस सेलेक्ट करूँगा और कलर पर यहाँ पर जाके क्लिक करूँगा, और अभी से मैं ब्लैक कलर देने जा रहा हूँ. so I'm gonna choose black color because I want to give black color to this text. Okay, there we go. Now our text is black in color. Now you guys can give it any color you want. कोई भी कलर दे सकते हैं आप. I've chosen black color. Now I'm gonna go here and under center I'm gonna click this position. तो सेंटर के नीचे ये जो बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा, सेंट्रलाइज कर दूँगा इसको, and that's it. Also guys, you can just change the text style. You can choose from this list available here, Arial or any format, any font you want, or you can even make use of typewriter special fonts, download them from internet and then just choose them from this list. तो गाइज आप लोग अगर टेक्स्ट स्टाइल
चेंज करना चाह रहे हो, एरियल वगैरह कुछ भी, या बोल्ड वगैरह करना चाह रहे हो, ये भी यहाँ पर है, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो इसे हाईलाइट करके. सो दैट्स इट, आई एम क्लोजिंग दिस डायलॉग बॉक्स. तो मैंने ये डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दिया, एंड दिस राइट हियर इज़ दैट स्पेसिफिक फाइल दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड. दिस इज़ दैट टेक्स्ट फाइल that I've created in which I've typed old vlog 2017. तो ये वही फाइल के तौर पे यहाँ पर आई है जो भी मैंने टेक्स्ट टाइप किया था old vlog 2017 के तौर पे. So now I'm going to drag drop in this timeline. Okay. तो timeline पे मैंने इसे place कर देना. Now you guys can see this text old vlog 2017 and the white background. तो आप लोगों को दिख रहा है ये text or white background. Now I'm going to go to effects panel and type in linear wipe. Linear. So there we go, video effects. Under video effects, transition and linear wipe. I'm going to pick it up and drag it on this text. तो guys effects panel पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं type करूँगा linear, और ये जो यहाँ पे effect आ रहा है इसको मैं पकड़ के इसके ऊपर इस वीडियो पर अप्लाई कर दूंगा. So after that, in effects controls, I'm going to scroll down and here is linear wipe. तो effects control में scroll करेंगे तो यहाँ पे linear wipe आ गया. I'm going to click here and increase this percentage to 100% and this wipe angle to 270. तो guys transition completion पे 100% मैंने क्लिक कर देना, टाइप कर देना, और वाइप एंगल जो है 270 डिग्रीज. अब उसके बाद मैं क्लिक करूँगा टॉगल एनिमेशन पर. देन आई एम गोना क्लिक ऑन टॉगल एनिमेशन एंड देन आई एम गोना स्लाइड दिस कर्सर टू द एंड ऑफ दिस फाइल, दिस टेक्स्ट. उसके बाद मैं कर्सर को एंड पे ले जाऊँगा इस वीडियो के, जहाँ तक भी मुझे ये टेक्स्ट चाहिए. एंड देन आई एम गोना चेंज this 100 back to 0. So you guys can see there are two keyframes. Now if I just move on my cursor, now you guys can see this transition on this text. Now if I move this cursor slow, it may appear as some typewriter is typing this text. So guys आप लोगों को दिख रहा है मैंने यहाँ पे 0% था 100% किया, और स्टॉप वॉच पर इस पर क्लिक किया और की फ्रेम्स जनरेट किए, और वीडियो के एंड पे मैं कर्सर ले गया और फिर मैं दोबारा से इसको 0% किया. अब अगर मैं कर्सर को मूव करता हूँ तो ये इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो गया और आप लोगों को दिख रहा है. Now if I just play this video, I see that the transition is too slow, so I can just make it play faster by just changing the positions of these keyframes. तो ये क्योंकि मैंने प्ले किया तो ये काफ़ी स्लो चल रहा है, तो मैं इसे इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकता हूँ की फ्रेम्स को इनमें चेंजेस ला के. एंड दिस राइट हियर इज़ द साउंड इफेक्ट ऑफ अ टाइपराइटर. ये टाइपराइटर का साउंड इफेक्ट ऐसे मैं यूज़ करूँगा इसके बैकग्राउंड में, और टाइपराइटर इफेक्ट की वाली फीलिंग आएगी हमें. So now guys, I've adjusted the speed of this transition and I've applied this sound effect. Now let me play this clip. तो guys मैंने भी स्पीड ट्रांजिशन की एडजस्ट की है और साउंड इफेक्ट मैंने इस पर अप्लाई किया. अभी मैं इसे प्ले करता हूँ. वाह, see how easy this is. Now let me just import some video as a background video. So guys, I've added this video clip from one of my vlogs on my YouTube channel. Now I'm gonna do some adjustments. कुछ vlogs हैं हमारे चैनल पे, उनमें से एक वीडियो है ये हमारी. I just want to show you guys how you can exactly use this typewriter effect on your videos. तो guys इस तरह से आप ये टाइपराइटर इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने ओल्ड वीडियोस पर, वीडियो डायरीज, व्लॉग्स, ओल्ड हों कोई भी वीडियो क्लिप मेंशन करने के लिए आप टाइपराइटर इफेक्ट देना चाह रहे हैं, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट मी प्ले दिस वीडियो. इस वीडियो प्ले कर रहा हूँ. Once again. So guys, now you're going to be able to add typewriter effect to your videos and make them amazing.
make some diary videos, old videos, and make some exciting videos. And if you guys enjoyed it and it helped you, and if you want to see more such exciting video tutorials on Adobe Premiere Pro, make sure you subscribe to our channel. So guys, अभी आप लोग टाइपराइटर इफेक्ट दे पाओगे अपनी वीडियोस पर, डायरी वीडियोस एंड एक्साइटिंग वीडियोस बना पाओगे। ऐसी और भी ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊंगा एडोब प्रीमियर प्रो पर, और उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।